अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते, छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलुरु। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता। एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है,
कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। चुपी ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या, ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते, ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है। तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते बोलते जाओ। सर,
तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आज़ाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाए, डेमोक्रेसी को टिकाए। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी एबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी। बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर, ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके, देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि
किस ढंग से देखिए बोलते हैं, नेहरू जी के कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट है। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर, शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो। सर, आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देखते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए
खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मेरी मजबूत बात को मानते तो नहीं लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा नहीं। सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साहब मणिपुर डेमोक्रेसी पर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं सर। वो देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैं नहीं बोला। नहीं, माननीय वो खड़गे जी, आने दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे याद से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं। वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे। लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे उस वक्त महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं have full update on this and No. inform leader of the opposition नहीं in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना, हर चीज पे जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है।
तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है, वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते हैं, चर्चा नहीं करते। सर हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ कितने सालों में? कितने सालों में? देखिए देखो मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर आप रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं आपके हाथ में, जिन्होंने फिगर ठीक दिया है, है मैं वो उनसे फिगर आपको पूछिए भेज दूंगा। कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं मैं डेट वाइज सर मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। वो फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए सर। ऐसा नहीं बोलो। गोयल, ये have क्या है? respect for your leader. ये चुप बैठो भाई, तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर सर पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं वो ऐसा बीच में बोल, आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became the कानून first बनाने chairman के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता है भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है और आप हमारे गार्डियन हैं और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी
यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हुआ। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूँ 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई 13% रह गया। साहब कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, तो ऐसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई
हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते, लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश की चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं, लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही है और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर राज्यसभा में इस जगह बैठते थे तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात 2-4 रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीज़ें जब होती है
आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है, क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, नहीं नहीं दूर दूर तक चले गए। साहब, ये तो मैं समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे देखो साहब, एक मैं सेकंड, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। ही हैज यील्डेड, ही हैज यील्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Micro Saab's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। So why are you commentating on his speech? जयराम जी, जयराम जी, Let him finish. this is not a good habit. Let him finish. No, you are a victim of this habit. Don't have this habit. Don't have this habit. No, this is not a. When the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Every time, I have no desire to sit there. even if you I have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting him, sir. please, take your. So, माननीय खड़गे जी, this is a rare historic occasion where, after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25-50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you have focused on two things, sir. I find it. There is a debate between you and him, sir. This is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. Allowed to speak. The problem, Allowed to speak, sir. the problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. This is wrong. This is wrong from your part, sir. This is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Don't do that. You are misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very partisan attack. Remark from you, sir. Sit down. Sir, please I explain your have own said, statement. one second, I request you to one second, explain your own Jairam, statement. take it. Sir, please Everybody is explain your own cooperating today. statement. Take it. You are misleading the house, sir. No. You are not debating here, Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, एक प्लीज। अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी,
with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum, discipline. One second. One second. Sir, please don't cast aspersions all on. One second. Sir, Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theatre sir, a मैं तो most खत्म करता important हूँ message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर, थैंक यू सर. क्या टॉलरेंस है अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर. सभापति जी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है. 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी. लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी. तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा. अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे. आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है. तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए. और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़. 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है. और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है. वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा. वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये. शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है. वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए. इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका. लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी. अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे. सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है.
G2 ठीक है, G2 क्या G? G20 सर। नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, Very good one. हाँ, आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन-जी, 2G दिखता होगा। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना, सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था तो माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं, उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना, मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का, मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया, अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया। लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में, देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का, एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है आवर अटेनमेंट इन 6 years is something which can't be attained in 50 years. Shri Mohammad Nadimul Haq. Sir, thank you very much for giving me the chance to speak on this issue. 4 minutes. Time allotted. So thank you for by your limiting. party. Thank you for limiting me also, sir. Sir, the word federal
is not mentioned in the Constitution even once. Yet, it is the spirit and soul of this country. Remember that this is not the House of Elders, it is the Council of States. Do not do anything that will hurt federalism. Do not do anything that will compromise the states. Do not assault federalism. Federalism is our nation's precious asset. So depriving the state of funds is a threat to democracy. Let me give you an example of my state, Bengal. Laborers who worked under Manrega from 2021 till now have not been paid their wages, amounting close to 4,000 crore rupees. If we include the non-wage component, the amount goes up to 7,000 crore rupees. Sir or Madam, 11 lakhs 36,000 beneficiaries have been denied the Gramin Awas Yojana. Under different schemes, the union government has blocked tens of thousands of crores to Bengal. This is not federal. This is against the states. 75 years ago, Dr. B.R. Ambedkar said, and I quote, "The Indian Constitution is a federal constitution in as much as it is established what may be called a dual polity, which will consist of the union at the center and the states at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution." Unquote. Remember that the double engine government that you propose is against the federalism that our founders envisioned for this country. It is against the very spirit of India. Sir, Madam, today in 2023, I quote Arundhati Rai, and I quote, "It is no longer just our leaders that we must fear, but a whole section of the population. The banality of evil, the normalization of evil is now manifest in our streets, in our classrooms, in very many public spaces. The mainstream press, the hundreds of 24 hours news channels have been harnessed to the cause of fascist majoritarianism. India's constitution has been effectively set aside. The penal code is being rewritten." Unquote. Madam, in conclusion, I must say that India's equilibrium depends on fair play. Do not penalize those states that have done better in successful implementation of schemes, but oppose you politically. Political parties come and go. Prime ministers will come and go. But India, its parliament and its constitution will remain forever. Thank you very much. Shri R.K. Rajesh Kumar. Vikramji. Sakrim Patra. Going through a change, ma'am. We'll come in the second sequence. We'll come a little later in the sequence. We come little later in the sequence. Shri Amar Patnaik. S.K. Niranjan Reddy. क्या? रामनाथ ठाकुर. Absent.
शक्ति सिंह गोयल। थैंक यू मैम। सर क्या लंच कर रहे हैं? मैं आज ये बात करना चाहूंगा कि हम जिस तरह से संसदीय परंपराओं की, प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं, तब मैं तो गुजरात से आता हूं जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिसे मावलंकर दादा के नाम से पहचाना जाता था, वो उस थे महाराष्ट्र से, पर कर्मभूमि गुजरात की होने के नाते गुजरात में एक बहुत बढ़िया परंपराएं वहां बनी और उसी को चलते देखते हुए आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी, सीडी, सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी ये थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हाँ बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो, हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां। शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को। पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए बाप ने थप्पड़ लगा दी। क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है। उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहां पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा मिली, बाबा साहेब आंबेडकर की उस स्पीच को देखना होगा। मैं तो सभी आपके जरिए सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा और धन्यवाद करूंगा स्पीकर मीरा कुमार जी का, उस कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का, जिसने पूरी संविधान सभा को एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत अच्छी फिल्म की तरह बना के रखी। मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैम, ये जो आंबेडकर जी ने जब ये बात रखी संविधान सभा के अंदर और कहा
कि हमने जब ये संविधान सभा शुरू की, मैं आया, मैं मेंबर बन के आया था ये समझ के कि कुछ दलितों की दो बात कर लूंगा। मुझे ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना। मुझे और ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और जब ये सारी चीजें पास हुई तब मुझे और ताजुब हुआ। पर मैं इन सब चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन को मानता हूं, उसको श्रेय देता हूं। और एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं कि जब ये कहते हैं नेहरू जी के लिए, मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो लफ्ज नेहरू जी के लिए कहे थे, कम से कम उसको एक बार पढ़ लेना, उसको एक बार दिल से लगा लेना। वो बोलने वाले विपक्ष के नेता थे वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था नेहरू जी के लिए, उसको कम से कम याद कर लेना। तो फिर आपको नेहरू जी के खिलाफ बोलने की कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी। मुख्तर सी जिंदगी है, अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। वक्त की पाबंदी है, इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। डॉक्टर M.K. थम्मईतुरई। Madam Deputy Chairman, 3 मिनट है आपका। I rise to participate. 3 मिनट। 3 minutes I can, what can I say? I don't know. Madam, as some members expressed, this is not a elder's house. This is a Rajya Sabha representing the states representatives. We are coming here to see the federalism has to be established. That is the history. For that only this house is there. I served as 5 times Lok Sabha member there, and also 2 times Deputy Speaker of Lok Sabha and presiding officer also. 15 years I done that. That the history is there. I want to say, sir, first of all, madam, in this house, our founder, Dravidian party leader, Per Anna, came here and sat in this house. He fought, he's a single member at the time, Dravidian party came at the time. Then 2 Lok Sabha members at the time. Now, afterwards, the development took a different way. My leader, Puthiya Thalaimurai Amma, created history, Indian history, bringing 50 members of the parliament, 37 member Lok Sabha member, 13 Rajya Sabha members, like that 50 members we have developed in this history. In parliament, 37 Lok Sabha member, the highest number we got the Dravidian party, then 13 members here Rajya Sabha, that total 50 members we started. When we Anna started for number 1 and took, like that history took place. Madam, when Anna was here, he fought for the federalism under the language issue. Because here the language is one of the important issues we are discussing. Every time the federalism is not respecting the regionalism, especially for Tamil Nadu, we are all fight for our language. Where Anna said, we want Tamil has to be made as the official language of this country. That is the spirit of the thing. Not only Tamil, whatever the 8 scheduled languages, all the language must be the national language of this country. That is what he raised here. We don't know what he is going to implement and going to achieve. Madam, at the same time, I want to make some other points. Then afterwards, our democracy has developed. We have 1967 onwards, our only Dravidian parties are ruling Tamil Nadu, but national party cannot enter. That is the situation is taking place. Because the regionalism is also important. That is why we are representing in the Rajya Sabha the rights of the states. The states are treated some kind of stipulated treatment, and they are not able to get sufficient. During my present General Secretary of ADMK, Edappadi Palaniswamy, was the Chief Minister. He raised many occasions
We wanted more funds from the state, but we could not get. But in spite of that, he ruled very well and got the good name. 4 years he established a good government in Tamil Nadu and became appreciated by everyone. Why I am telling? Because even though we are now some limited members in the Rajya Sabha, we are still fighting for our Tamil Nadu people, for Kaveri issue like the important issue which is suffering now, the Kachetivu issue. They, in spite, without the approval of the parliament of the both houses, the 1972, 74, 75, at that time, the Congress people only given the Kachetivu to the Sri Lanka government. Still, it is part of our India. It is not approved by this parliament. We are fighting for that. ADMK is fighting for that. Our Amma, I went to the Supreme Court and filed at the time. This Kachetivu is a part of our India because our Tamil fishermen is suffering that. This kind of rights we have to fight, and this history we are going fighting, madam. Madam, and also, apart from that, now we are facing so many problems, but the parliament also were raised regarding, for example, take a pandemic situation. At that time, we all united together how to solve this problem. Our Prime Minister, Narendra Modi ji, successfully has done so many wonderful things. And also state government, Edarpadi Pallisamy, during this period, he implemented a lot of schemes to save the people of India. Because central government also gave a lot of assistance to the state government, this cooperated with us, with the help of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Edarpadi Pallisamy, done excellent work at that time as a democratic way, because the history shows how the parliament is functioning and how we are playing the game for the welfare of the people. Therefore, even though the building is, we are seeing that sometimes they say it is built by British people. It is not. It is our Indian property we are having here. Even though we were moving from this building to another building, the site is also on the same area where the British people established our building. It is not somewhere not removed from this place to any other place. Therefore, convenience sake only we are moving to that place. I am appreciating our Modi ji has come forward to establish a new building to accommodate more members and also with the good facilities. For that, we are going to move that building, not any other sense. Therefore, democracy in the 75 years, we have come journey, we have so much journey, so many obstacles we had, so many times we have tried so many issues in the parliament also. At the same time, madam, I am very grateful that you have given sufficient time also. But still, I am insisting that federalism must be protected and giving the more rights to the states, not only Tamil Nadu, other states also. And also a request, whatever Anna raised the issue, make all Tamil my language and other Telugu and other Malayalam and other Marathi, other all languages, especially the official language of the country. That is the spirit we have to see for whatever we got for freedom. This is the highest parliamentary system. In the journey, we are risking to respect the states and culture of the various states, where Narendra Modi ji always praising Tamil and other things. Same way, we are requesting the parliament has come forward to see that the languages, all the languages of the eighth schedule must be said, languages of the national, that is one of the things. That is the spirit of the democracy and also federalism. That is the parliament which we have to make the thing. Once again, I thank my leader, MGR, MGR sent me the parliament and has made him a deputy speaker at that time. Rajiv Gandhi was at that time prime minister. Afterwards, Amma made me the central minister in Vajpayee government. And afterwards, and Modi ji and also Amma made me deputy once again 2014. And this kind of experience I had made throughout life. I had the opportunity to serve this parliament and hope that this spirit of the parliament democratic system has continued. We know because whatever the opposition people raised in democracy, there must be some kind of opposition will be there. The ruling party also, they want to say, implement their programs. Therefore, both has to come together. There must not be any difference between them. Because government, the ruling party has to say to implement. That is why they elected. They have to implement program. Opposing can raise it as a discussion, must not disturb the things. Therefore, this kind of democracy has to continue. The parliament, 75 years after freedom we have done,
As I said once again, as our forefathers thought that federalism must be very important, because we are speaking, it is Rajya Sabha. It's not the elder's house. It is not, I am not an elder man. He may be elder man, he's not elder man. There are young people also there. It's not the elderly house. This is the Rajya Sabha. State representatives are here. Therefore, whatever the state issues are raised here, that must be given importance. That must nullify that. That can't have therefore. And second, thank my leaders, Professor MGR and Professor Amma, Yadapadi Palinsami, my General Secretary has sent me to the Rajya Sabha as a member. I once again thank all my leaders to have the opportunity. Thank you very much. Sri K. Keshav Rao. How much time you want to give me, madam? 12 minutes. 5 minutes? 12 minutes. 12. 12, 12. Thank you very much, ma'am. Whatever it is, you have the time. Ma'am, get up to speak on this 75 years. Everybody knows we have really done, we have achieved great strides of progress during this period. There's no doubt about it. I don't want to politicalize the entire thing. But let me tell you, our journey has been a tragic journey. It has a beginning. We thought of independence for a nation, but we got two nations. It would have been all right if they were two nations, but unfortunately it became two people. It would have been all right if it were two people, it had become two races. So the entire world has started fighting against each other. This is one thing we could not withstand, nor could win over during the last 75 years. This really hurts me. Today, the hangover continues. Today, the people are getting identified more by their religion and caste and region than themselves. This is something the 75 years of independence could not get it. Although economically, we have done very, very good, better than many of the states. We are fast-growing nation. But this kind of divide that we still have, which the British took advantage at one time to differentiate those two people, the Hindus and Muslims, that was the divide they depended on, is still continuing. Its shadows are still lengthening. This is something which really hurts us today when we are standing to gain out of it. Madam, to really speak, it is not 47, it is 1930 where the Congress party declared itself as an independent and passed the resolution, and there were all over the country the celebrations of independence at that time. Anyhow, whatever it is. But we did not have at that time, when we had partition, and when Nehru went to give his stirring speech of Tryst with Destiny, where he had said, we had promises to keep, not if totally, at least substantially. And we have really done substantially well during the past 25 years. I'm not talking about these 10 years. Even these 10 years, you also might have done good. This morning we were hearing a statement made by the chairman, a resolution, I don't know in what kind it came, but it did come. It spoke very well. The wording was good. I only hope that we followed it in our country to give rise to the people's voice as you want to do it internationally, when you want all the 125 countries to do it. This should have been really good, ma'am. That is the feeling one carries along. Madam, when we think of Nehru's speech, there is some guffe in that. Nehru, after the speech, went to give his list of ministers to Governor General. You know, he went and gave an envelope, an empty envelope. There was no paper at all inside. There were no names of the ministers. It was only 15 minutes before the real swearing in that they found the paper and found. Why I'm mentioning this is, please look at the kind of polity we had at that time. It might be Gandhiji who said, we got independence for the nation, not to the Congress. We had in that cabinet, we had people who were adversarially opposed to Congress. Absolutely, who had aversion.
who did not participate in the freedom struggle at all, 3 of them. But yet, Nehru did not have any scruples, any reservations in including them. I am taking Ambedkar or Shyam Prasad Mukherjee, who were against Congress and who were against the movement. They were supporting the rulers at that particular time. I am not trying to please diminish or dilute the importance, but I am telling you the kind of mind we had, the broad mind that time government had. It wanted to take all people, it wanted to be inclusive. That, as I said, is being lost today. In the name of, you call Hindutva, whatever it is, today majoritarianism has come as a mass mobilization movement, which is wrong. We have never thought of majoritarianism of Hindus. We knew it had 82% of people, but today it has become a mass movement. That also is something which we must still fight over. So, as I said, it was Sen who said, Amrita Sen who said, Hindutva movement that seeks to convert the religion of the majority in an identity of mass mobilization. He said secularism as it is practiced in India, to some degree the working of Indian democracy, which remains the best guarantee of Indian pluralism, have served to create the postulates of India's various particularisms. India was a particular. If you look to each decade, it had its own map. We had the second thing that we had to do after getting the independence was not only get this kind of inclusive cabinet to govern, but we had also wanted to get all people on the board. This is what exactly Congress did at that particular time, because there's no other party, so let me not talk about it. But at the same time, we had what is called the other challenges that it had to see. The challenge of language, challenge of caste, where the challenge of religion, where challenge of the states, which has turned out to be an issue of federalism, the class, rich and poor. This was very important. These are things which had to do. Then gender. Sir, I will go and first try to tell you the class approach or the class situation that we inherited at that time. Some being rich and some poor. What did we do in these 75 years? We did not bridge it at all. We had allowed it to continue. So much so, today, in a given developing situation, it shows you more cracks than the bridging elements. This has to be understood. I'm only trying to point out it because I don't want to take much time, because we can talk much about rich and poor divide and how the 1% of people are holding the 40% of the nation's wealth. All this can be discussed, but I'm only trying to mention, because all of you in this house who have discussed these issues earlier know it better, that what exactly is the situation as far as the class is concerned. We always talk about the caste. Caste is there. The Varna system that we have inherited is something which is a debase, which is an insult to a nation. Yesterday I was trying to raise in the leaders opposition meeting something about Sanatana Dharma. Because I'm a student of Hindu philosophy. Let people sitting that side know that you are not the monopolist of the Hindu philosophy. Because Hinduism is some word which came only in the 6th century. All right, let us forget. When we talk about Sanatana, I'm talking to you because the Constitution speaks about it. The Constitution, its preamble, ensures, although it did not use the word secular, it said, when it said about equality of religions, it talked about secularism. But I should congratulate again later this government, this nation, for bringing the 42nd Amendment, wherein they made it specific, a secular, a socialist secular nation. These were the two things which were missing, although they were practicing. This nation was essentially a socialist nation. We must understand at least 64% of people were really poor. 36 below the party line. The word socialist meant the equidistribution of the nation's wealth. This exactly we realized
and we brought in an amendment to the Constitution itself in its preamble. This is another great achievement that we have done. Having brought that, did we do anything? Did we walk the talk? We did not. The system did not allow. Today, unfortunately, when we are trying to talk about 75 years of journey, I tell you for the last 10 or 12 years or even 15 years, let me say 91, when we thought of liberalism, even we had given, if not total goodbye, we have started diluting the importance of looking to the poor and looking to the development from the socialistic angle. We had a socialistic view from the awardee session when Congress moved the social pattern of society. Even Communist Party had to close down their shutters because you do everything that the nation wanted ideologically came from them. And all of us who were in the schools in those days, I'm a witness to this 75 years journey, sir. Because I'm today 84, but I have seen this 75 years journey. At the time when the awardee session came, as a socialistic pattern of society, it was not, we did not talk about socialism as such, because there was a crisis at that particular time. This is a part of 75 years journey. We must understand, great debate went on. Whether we should go totally on the Russian model, or should have a socialism of our own, because Raman Royaji and other socialists in this country thought that socialism can be caught for the Indian ethos. Confused by this kind of, if not dichotomy, a discourse, schism, Panditji thought we'll say same thing, but as a pattern of society. But he committed the society to develop on the basis of socialistic ethos. When he said this has come. So the third thing that we have achieved, great thing, was during the BP Singh's time. When BP Singh came, the Mandal issue was there earlier. The reservation to BCs was there in the Congress session. I was a minister during the Congress regime. We knew that we brought in 15% to 25% in states, but yet accepting it at the national level as these people whom you under Varna system considered as something lower, I would not like to say, because I resist the very word Varna. So VP Singh is the one person who has brought this. This is something goes to the credit and goes as a feather in the cap of the Indian achievements. Sir, then we come to one unfortunate part. Is time over? Yeah, 12 minutes. So we come to the part of religion. Today, as I said earlier, today we are trying to be identified more by our religion rather than by our nation. Mussolini, the great Italian writer, said, Italy we got, but Italians we not yet got it. Not that Nehru is the person who has made all of this. We were idiots. They were cynics at the time when we got our independence, like Secchi, like Churchill, like Kipling, many Dubé, who are not, name them, you get them. All of them thought that India will not be able to sustain democracy at all. It will go back to the age of barbarism, age of privation of the middle classes, and this kind of thing. But India not only sustained, not only democracy lived, but lived so well that other nations are looking to us for democracy. It is because we had a democratic tradition from the millennia. In Maurya's time, we had done the republics, something like 260 republics in the Mauryan Empire. What we talk today as caste was a jati at that time. We had something like 3,000 jatis at that time. But there was no kind of clash as we find today. This is how we have not been able to manage. This is a recent phenomenon. Let me also tell you. We had real communal tension, we had a communal violence, but at present it has become some kind of pride. As I said, majoritism has become an issue for mass movement.
mass mobilization. So once it Sahab, comes, it please conclude. really troubles you most. Sir, I come to Hinduism, I'm not trying to take on the fundamental Hinduism because there's nothing like fundamentalism at all in Hinduism. Take it from me. Hinduism is a way of life. Anything that transcends time and space is called truth. What you say today, if after 100 years people believe the same thing, and anywhere else in the world is the same thing, it remains a truth. That is, Gandhi reduced very aspect of God as a concept and said truth is God. This is what Hinduism is all about. It is only not because I should believe in Rama or I should believe in Krishna. Just now, the ADMK man was telling me, in Madras we had a movement which totally opposed it. Today we have people who don't believe. If Hinduism is all that big, there wouldn't have been the need for Judaism. If Judaism is all that big, there wouldn't have been a need for Christianity. If Christianity is all that big, there wouldn't have been a need for the Islam. If Islam is all that big, there wouldn't have been a need for the Sikhism. So all this comes time and space, take it. They include truth. That is what exactly Hinduism has done. I consider this as one of the greatest thought processes. Hinduism is one of the great thought processes which takes everybody to it. I am a Charvaka in me. If I believe in God, I am a Hindu, sir. Your time is If over. I don't believe in God, I am Charvaka, sir. I am a Hindu, sir. If I believe in somebody who reads a good, I am a Buddha, I am a Hindu, sir. If I am Jaina, all of you are the Buddha, sir. Karnataka, yesterday I was telling the leaders of opposition, they have got their funds. They don't believe in God, they believe in Shiva, they believe in... So what is Hinduism? It is self-realization. So let us all believe that. Let not the Prime Minister of the day say that all Sanatanis should unite, as if it is a war crime. I think, at this age, this is not something which is good to come from a people, because we accept all religions. Yesterday, Mr. Chidambaram was saying something, lots of stuff. Mr. Chidambaram was saying, he was quoting Madhavacharya, 16th century saint, Indian saint. When he said, Sarva Dharma Samahava, so same thing, it is quoting Madhava or other saints. But all the believers in Hinduism believe that all are there. That is why we say, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. People may call it by different names, but truth is only one. We believe in it. Unlike others, I am not trying to criticize other religions at this time, they believe that mine is there. There is no Mr. Christ or Mr. Muhammad or no Mr. Zoroaster or no Mr. Confucius. We had a Hindu thought process as such. So this, I don't know, we are losing track. We must get on to that. We must build a nation, Indian nation as such. We are first Indians, last Indians. We are Indians. There is no question of first or last. Saying, like Sanatan is saying, there is no beginning and there is no end. If there is no beginning, where is the question of it being there? So let us not think. It is there. It is truth. It is all pervading. So I tell you, sir, the 75 years journey has been really rewarding, has been very good. I also congratulate, we had beginning, I told you, Tajik, the G20 was a welcome thing. But as I suggested earlier, let us learn to live with what we always boast of. We have today morning gave that big statement. I think you give scope for expression from all sides. Then what I call freedom of expression, that should be respected. The people's urges should be respected. You should not use your own agency because you are powerful. If that were to be the case, earlier regimes would have done that. Nobody has done it. They have respected nation. We have allowed the nation to grow. As Gandhiji said, independence is not for Congress, independence for the nation. Let us all think this nation, development is for the entire nation, not for one party or one thing. Thank you very much. Thank you. Now, Mr. G.K. Vasan, 3-4 minutes. Sir, thank you, sir, for giving me an opportunity. We all understand, sir,
historic Parliament building. Today is the last day of our speech in this building. Maybe tomorrow we are all moving to the new Parliament, sir. This is the time to salute and respect our leaders who fought for our independence and got independence for us. This is the 75th year of our independence, sir. We remember the father of nation, Mahatma Gandhi, and all our leaders from various parts of India who were with Gandhiji and who fought for this country's freedom and who taught us ahimsa in this country, sir. Sir, we also have to be very proud that we are the largest democracy in this country, sir. We have genuinely, sir, preserved the sovereignty, integrity, security, solidarity of this country with pride, sir. We have made remarkable progress in the 75 years in the field of education, agriculture, healthcare, industrial growth, economic equality, and even in scientific space research, sir. Above all, as Indians, we are all proud today that our nation is looked upon by foreign countries for our helping hand and support even in international problems today, sir. This is the Parliament where legends have spoken, sir, in various subjects for the interest of this great nation, sir. We should be very thankful to our regional leaders, sir, who have been in this Parliament, spoken for the interest of the country. From Tamil Nadu, sir, I would like to proudly quote Rajaji and Kamarajji, sir, who have been the pioneers, and even today, sir, they are leaders who are the icons for youth in this country, sir, especially Tamil Nadu, sir. The national approach and outlook of leaders from the south, sir, has been great in the development of this country, sir. I must also place on record, sir, that India has achieved great heights during this 9 years under the Prime Minister of Modi ji, sir. To conclude, sir, I would say that the schemes, plans and programs launched by the government has embraced every citizen and have enhanced and improved the living conditions of every Indian, sir. With this, sir, I conclude my speech. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me opportunity. Thank you. Ramnath Thakur ji. धन्यवाद श्रीमान the chair when our chances will come. No, it's just that's a question. I was told that he will speak after half an hour. No. Who said? I did not say. I also said like that as later. No. No, it is good that we should make new traditions, but then we have to follow the traditions also, how the house runs. Please let him speak. So, welcome. Ramnath Thakur ji. But I have a right to ask a question. Kalita ji. श्रीमान Kalita ji. श्रीमान No, I appreciate your support. श्रीमान but then in the process our turns are not coming. This is no discrimination. श्रीमान Yeah. He will also give you a chance. श्रीमान Yeah, please. मैं आपको He will also धन्यवाद get you a देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सदन 75 वर्ष के He will get you a chance. No worry. 75 वर्ष में जो इस सदन का गरिमा रही है, जितने जितने महान पुरुष इस सदन के सदस्य रहे हैं, पीलू मोदी, राधा कृष्णन, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, चंद्रशेखर, राजनारायण,
उन महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता की आवाज को जो उठाने का काम किया है, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादियों का जो ध्येय था, समाजवादियों की जो मांग थी, उस मांग को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। काका कालेलकर का जो रिपोर्ट था, जो नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1978 में, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और बिहार में पहला राज्य था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। 1990 में मंडल आयोग के इसी सदन में जो दबाव पड़ा था, इसी सदन की बात है, जो दबाव पड़ा था, उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मॉडल जो था वो जातीय गणना का पूरे देश में होना चाहिए था। बिहार ने इसको लागू करने का काम किया। महिला को गैर बराबरी 2005 से जो नगर निकाय में, पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को बिहार ने लागू करने का काम किया। श्रीमान, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नए भवन में जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार महिला को 33% आरक्षण दे करके इसमें लागू करे। मैं तो समझ रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार के द्वारा, उस सरकार में ये मणिपुर पर चर्चा होगी, मणिपुर के समस्याओं को सरकार दूर भगाने का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अभी तक मणिपुर के बारे में कोई काम नहीं हो सका। मैं 2-3 बातें कह करके अपने सुझाव को रख करके आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 75 वर्ष में, 9 वर्षों में जो सरकार काम किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जेलों में जो बंद कैदी हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास कि अपने को वो बेल करा सकें और केस लड़ सकें, तो हम आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आपने जो ये सत्र बुलाने का काम किया है, तो जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ने का काम करें, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह विशेष सत्र बुला करके या विशेष दिन रख करके महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसी तरह आपको चाहिए था, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए, आपकी सरकार की उपलब्धि बढ़ती। इसीलिए हम आपके माध्यम से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, हम देख रहे हैं, देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, सरकार ध्यान दे और उस पर अमल करने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, 6 minutes. Thank you, sir. Sir, when we are having a discussion with regard to the Amritagal, I would say that I have a 3-dimensional view of the Indian Parliament. I used to watch the Parliament from outside, from above, and now I am being part of this Parliament, sitting below, sir. Sir, when we speak about Parliament, the basic aspect which we need to keep in mind, that is parliamentary democracy, sir. That is very important. Sir, what is the tenet of parliamentary democracy?
the fundamental cardinal principle of parliamentary democracy, as Karge Saab said, accountability of executive to the legislature. Niranjan Saab, aap senior advocate, sahi hai na? Have you ever seen an accountability of the executive to the legislature? Have you ever seen? Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House was very vocal, but he missed many crucial names, sir, including Jawaharlal Nehru. Intention. And I know that when Dharmendra Saab is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Saab. Sir, I'm telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you're speaking. Dharmendra Saab. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it, sir. Sir, it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice, sir, we don't want to speak out the Oxfam report because that's not a good company for good organization for the present dispensation. It's blacklisted. You see the inequality that is spiraling up, sir. Sir, the liberty that has been assured in, where has it reached, sir? Now it is more manifested in the form of sedition and UAP. That is a liberty which has reached. Sir, another cardinal principle is equality of status and opportunities. This government is honest to say that they don't believe in it, sir. Ambedkar, who they try to appropriate now, was absolutely clear when he said that democracy is not the law of majority, but the protection of minority. Raji Chandrasekhar Saab, protection of minorities. It's not said by John Brittas, by Ambedkar Saab. Sir, what is the representation of 20 crore Muslims in executive, in legislature, judiciary, even in media? P.T. Ushaji, you know that, the representation of Muslims, Christians, minorities in Kerala. What is the situation in Delhi, in Parliament, in executive, sir? Sir, we all talk about this government's pet topic is to, discuss about Mughals. I say they talk about Mughals more than the Indians now, actually. Sir, in Akbar's court, or even in Aurangzeb court, more than 50% of the ministers were Hindus. Neeraj Saab, Birbal, aapko jante hain na kaun Birbal tha? He was a Hindu, sir. Can you spot somebody in this executive now? What is the status of the representation of minorities, sir? Sir, Nehru's cabinet, that was the first ministry. It was a model government. It had given representation to every segment. Dharmendra Prasad Saab, 2 Muslim cabinet ministers. You know Maulana Azad, Rafi Ahmad, John Matai, that was a Parsi, Sikh, everyone. Of course, Shama Prasad Mukherjee. And even not having ideological, I would say, togetherness. I know Derek Saab, representation from Bengali, of course. Sir, it was Maulana Azad who stood on the steps of the Juma Masjid and said, this country is ours. We have built up this country. There is no need of going away from this country. You want to obliterate the last set of memory about Maulana Azad, you scrap the scholarship. Dharmendra Prasad ji, you scrap the scholarship. Not you, I think Smriti Irani ji, I think. Even that, not he didn't scrap. Sir, come into fraternity.
Sir, what is the new usage of fraternity? Madam, you know what is the new usage of fraternity? Go to Pakistan. Go to Pakistan. If somebody speaks, they will say, you go to Pakistan. Sir, we are part of this country. We are as patriotic as you are, sir. Sir, maybe more. So now G20, there have been a lot of discussions, fanfare about G20. We appreciate if India get a standing amongst the other nations. But if you look at the indices, Rajiv Saab, what is indice? Per capita GDP, Human Development Index, Hunger Index, hum last hai. Bilkul last hai. And is that the reason why you brought in African Union to the G20? So that we did not be last? Anyway, I appreciate that. Sir, coming to the preamble again, sir. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, sir. Sir, what is sovereignty now? Hugging Western leaders from Trump to Biden doesn't mean sovereignty. You finished up now because Nehru's name is there. We don't want non-alignment movement to be there. Just because Jawaharlal Nehru was instrumental in setting up non-alignment movement. Now, sir, the second word, socialism. What is socialism, sir? Socialism has become Adanism. That is a new word, Adanism. PT Usha, madam. Socialism badal gaya, Adanism ho gaya. Chupchap baith rahe aap. You should be standing up and talking about that. Now, sir, secularism. Another thing, sir. See, secularism. You know, a gentleman sitting in Prime Minister's office had the audacity to say, Dharmendra Prasad sahab, Dharmendra ji, suniye sir, Bibek Deb Roy, this constitution has become useless. Only 17 years it can stand. And he said he doesn't understand the meaning of socialism and secularism. A gentleman heading the Economic Advisory Council of the Prime Minister had the audacity to come and say that he doesn't understand the meaning of secularism and socialism. I would have expected a cabinet minister, the stature of Dharmendra Pradhan to say, shut your mouth. Did you say, sir? You should have said it. Sir, now, another word, sir, democracy. See, many of the members think, sir, democracy has turned to be namocracy or modiocracy. Sir, democracy or modiocracy because we don't see the Prime Minister. My daughter was asking, did you get an opportunity to sit with the Prime Minister? Sir? I said, no. Very rarely only I get, sir. So, what does it mean, sir? Democracy means accountability of the executive to the Parliament and Parliament being accountable to the people. That is democracy, sir. Sir, republic. I know where is Rajesh Sinha ji. For Rajesh Sinha and others, you know what is the meaning of republic? Vice Chairman, sir, you know what is the meaning of republic? Arno Goswami. That is the meaning of republic for many of the treasury benches people. Sir, that is the state of affairs of this country. Dharmendra ji, please don't look me like this. Please. You will sir. Please conclude. Sir, please. this time you will have to give me, sir. John, Please conclude. I will yield, sir. I will yield. अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जॉन बिटास अच्छे बोलते हैं और उनकी मुंह से हम लोग नेहरू जी की प्रशंसा सुन रहे थे, अच्छी है। मेरे को लगता है जॉन बिटास थोड़ा अच्छा रहता राज्यसभा में जब नमूद्रीपद जी की सरकार को केरला में पहली बार तोड़ दिया गया था, राज्यसभा ने क्या डिबेट किया होगा, उनकी पार्टी ने क्या व्यू लिया था। अभी बहुत तो नसीहत डेमोक्रेसी के बारे में दे रहे थे, अभी उनके बारे में जिस विचार पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जीते केरला में, उन्हीं की सरकार को जिनकी आज कसीदा पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, नमूद्रीपद जी की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। तो उस समय में राज्यसभा में सीपीएम के मित्रों ने क्या बोला होगा, थोड़ा अगर लाइट डालते तो शायद जॉन बिटास से हम ये अपेक्षा कर रहे थे। ये मोकरी जॉन बिटास, यू आर वेरी एनलाइटेंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डोंट लाफ एट योर कॉलीग्स, you may get box news in the Indian Express, but we expect some good light, good view of yours. When Namboodiripad was dismissed from the Kerala, what was
view of CPM in the Rajya Sabha. Please enlighten us. Thank you, sir. Sir, thank you, Dharmendra ji, for reminding me about the dismissal of EMS Namboodirippa. For such misdeeds, they have been punished. They are sitting here. Precisely that is the reason. Otherwise, do you think that they would have been put here? But you are repeating the same mistake. You are calling us, depicting us as Somalia. Say extreme poverty, let us look at. Extreme poverty in UP and Bihar is 30-40%. In southern states, it is 10%. In Kerala, it is almost zero. Yes, almost zero. Extreme poverty. Sir, it is because, sir, so much of disruption, sir. I want your protection, sir. I want your protection. You have my protection. Yes, sir. Sir, this happened because, Mr. Muralidharan seems to be a Keralite, but his only job is to act against Kerala. Yeah. His only job is to act against Kerala. Sir, when we talk about 75 years of Indian democracy, we cannot forget the name of Mahatma Gandhi. I was surprised that nobody from the Treasury bench even referred to Mahatma Gandhi. Just because he held Gita, Quran and Bible close to his chest, he was assassinated. He was assassinated. Only because of that. Everybody knows about it. Sir, you are replacing Mahatma Gandhi with Savarkar. That's why, sir, the new parliament has been inaugurated on the birth anniversary of Savarkar instead of Mahatma Gandhi. You should have. If you had some respect, you would have done, sir. Sir, further, sir. Time allotted is over. Sir, I wanted to say your time is over, sir, so but I came to know your time can never be over. 2 minutes. I'll finish, sir. Sir, 2 minutes. Sir, the biggest business, sir, please. The main business of this government is to appropriate people. Sardar Patel. They think that Sardar Patel is theirs. Sir, wasn't Sardar Patel who banned RSS after the assassination of Mahatma Gandhi? What did he say, sir? The banning was to root out the forces of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of nation and darken her fair name. Sir, another person who is being appropriated is Vivekananda. Didn't he say so? Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. That is what Vivekananda said, sir. Sir, the unfortunate part, sir. Sir, you are a legal luminary. We are very happy that you preside over this house, sir. Your rich knowledge. Sir, I have seen you as a minister. In 1989, when you came to Lok Sabha, sir, I was in the gallery, sir. With huge admiration, I have been observing you and watching you, sir. Sir, but the unfortunate part is that, sir, the demolition of every institution in this house, in every institution, from Parliament to Election Commission. Please conclude. Sir, I am talking about you also, sir. Sir, that is why you have to conclude. Sir, I am going to talk about you also, sir. Conclude. Every institution in this country is being demolished. From Parliament to Election Commission. Sir, what is Election Commission now? Now they are bringing the status of the Election Commissioners from the Supreme Court judge status to Cabinet Secretary. And day after tomorrow, Dharmendra Pradhanji will bring a bill to make them a chaprasi. That is going to happen, sir. Sir, every institution is being disbanded, sir. Sir, Article 1. Sir, last one. Siri Vaiko. Sir, I'm just writing it. 1 minute. 1 minute. Sir, 1 minute. It says that India, that is Bharat, shall be union of states, sir. Sir, federalism, sir. Kerala contributes 1 rupee and get back 25 paise. That is the status of federalism in this country, sir. Yes, it has turned to be like that. The honorable... Sir, I would say that. You told me, Once again,
Chairman, sir, One you second. wanted us to, I mean, One have second. some change. The honorable member has made a statement of fact. Yes, sir. He will authenticate. I will authenticate. Authenticate. Sir, Kerala contributes 1 rupee to the national kitty, gets back 25 paise. I repeat it. I will place the document on the table of the House. During course of the day. Sir, and sir, last thing, sir. Sir, it's good that we are taking stock of this country, democracy, institutions, parliament in this Amrit Gulf. Sir, structure doesn't matter, sir. New parliament or old parliament. The process matters. The content matters. Can we enrich the parliamentary proceedings? Can we enrich the democratic process in this country? You can build mansions, structures, but sir, that will not strengthen the democracy in this country. Unless you enrich, sir. Please now, I would urge conclude. I would urge upon the treasury benches through you, sir. Let us all resolve to enrich the democracy of this great nation. Thank you, sir. Okay. On a point of information from you, have you been to Statue of Unity? Have you been to Statue of Unity? Sir, I haven't gone, sir. I will go. I strongly suggest you go there once. I will go, sir. I will go, sir. If you give invitation, I will go, sir. Great effort to appropriate someone. Sir, if you give an invitation, I will go, sir. I've been there. Sir, and sir, I'll be happy to go with you, sir. No, I'll go with you. Sir, Mr. Waiko. Sir, let me have a towering personality beside me when I go. Let us hear Mr. Waiko. Mr. Chairman, I am extremely thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion on parliamentary journey of 75 years. Starting from Constituent Assembly, its achievements, experience, memories and learning. It was also a long journey for me, having entered Parliament in 1978 as a member of Rajya Sabha. Now it is my 4th term in the Rajya Sabha. Apart from being a member of the upper house, I had the honor to be a member of the Lok Sabha for 2 terms, in the 12th Lok Sabha and the 13th Lok Sabha. There were many swings and waves the nation has witnessed in the last 75 years. But what is shocking me, why the name is changed as Bharat. And when the G20 meeting took place, before the Prime Minister, the name was Bharat, not India. So we are not representing India. Then you call it United States of India. That should be called. All the states should be given equal opportunity. Bharat, where it came from Bharat? From Upanishads, from Sanadana and Hindu Rashtra. So they are trying to take this country towards Hindu Rashtra. But one thing, I would like to tell them, you never entered our area. Guptas never entered. Mauryas never entered. Nobody entered to Tamil Nadu. But we have come to Ganges. We have come to Himalayas. Sir, I am very sorry. The Prime Minister of India, he is putting Bharat instead of India. So hereafter, we have to call India. Why he is afraid of India? The formation of India has threatened them. The formation of India has threatened them. Therefore, they have put the name as Bharat. Sir, I don't want to take much time because you have given me a privilege to take this time. I demanded installation of Ambedkar portrait in Central Hall of Parliament, allowing army men belonging to Muslim community to offer Jummah prayers on Friday. Sir, secularism is under threat. The Muslims are under threat. The Sanadana forces are threatening them. They are afraid because you leave India, you Muslims India. This is not your country. This is the voice of the Hindu Rashtra people. In this way,
the country will be balkanized. I today warn you on this particular day, it should be noted that it will become Soviet Union. What happened in Soviet Union, this will happen in India. India will be balkanized into so many states, and therefore I said United States of India. But at least you make a name United States of India. Otherwise, India will not be one. When you want to celebrate centenary celebration of independence, but 2047, there won't be any such India. Thank you, sir. Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar. Leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member of parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. शुक्रिया शुक्रिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन के नहीं शुक्रिया मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं यहां से बोल रहा हूं, इधर मैं यहां से बोल रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया, तो मुझे स्मरण है ये किताब, मैं एक ही किताब लेके आया हूं, ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की। तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हाँ, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आए थे। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही, उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेश नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया, तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उपसभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई।
मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है, 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का, बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है, इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे, इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बूद्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है, उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं 2 व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो BR अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए, जिस हॉल में वो लोग बैठते थे वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया, तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की, उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए, हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए, जो बाबा साहब कह गए थे। 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब 2 और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है, मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है
तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां का भूगोल क्या है, इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे? ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मेलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो, हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं? और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर। देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए, दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। संविधान सभा के उन तमाम लोगों को, और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगर में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, we all the members sitting for the last time in this building. Tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we are going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. So I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the duty. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi
And in class 8, in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir, madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside. And in 1996, physically for the first, I entered this house as a Member of Parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a Cabinet Minister of the country in the year 1996. And it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, although I was a member of Lok Sabha, but as a minister, I was attended this house also. It is painful, no doubt, from tomorrow we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After them, many things was discussed inside this Parliament building. When China came to near to Tezpur, China came up to Bombila. People of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 61 session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Borua, who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared, evoked in our country. And at that time, parliament was not functioning, parliament was dissolved. Our honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Vaishali. It was started in Vaishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Vaishali of our country is the first place of democracy started, where in Vaishali town, it was 600 years ago, 707,000 people
locally elected people, selected people sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country, for develop our country, and financially to improve our country. Many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Vajpayee, budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratory personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I am learned many things from these people, sir. Ma'am, I remembering my first day in the life when I was a student of class 8. I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician. But I am a son of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I am not speaking about my political party, then it will be not fair. I am getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I am grateful for my country. In my life, I am working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajya Sabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building, and from tomorrow in new building
who start our new parliamentary life, our new democratic life. With this word, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs, and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our Parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our Parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy. There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament committee and internal part of our democratic system has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent. Recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new Parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our Parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir.
I get up to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building, and how can you be so sure? Well, I said probably, and I'm sure we are all filled with a sense of. Tomorrow we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course, we are Me all. and Praful Patel got together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here, and definitely 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time. A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples. But no country, as again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी. एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था. तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था. तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है. और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं,
तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला, तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honourable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honourable Chairman, for giving me the opportunity. क्या पता कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajya Sabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajya Sabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair. And
And he was followed by, of course, R. Venkatramanji, Sangadel Sharmaji. And today, you are in the seat, sir, and I thank you for that, that the Indian democracy and Indian Parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan Sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women of all religion, all communities were given equal power, and that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Rao ji. And today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam,
Another remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of parliament, was the GST. The GST was goods and services tax was implemented and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019, this country had two constitutions, two flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable thing, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also help other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and the entire country was vaccinated, and today we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, what during the 75 years of our journey, what achievements this country has made. Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million in 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajya Sabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line
Up to this 75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to go, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort. And every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, now I am going to conclude because there are some more speakers. They are also and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our Parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950 to the recent inauguration of a new Parliament building in 2023, these events signify our nation's growth, resilience, and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam. Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साइनी। Honorable Chairman Sir and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temper of our world's largest democracy. Indian Parliament is an aspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism,
social justice and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफर करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियटिज्म हमारे सामने है। I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aав ki Aud Nidhan Bane, At Hiran Mein, Tab Juj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same parliament building, while presenting the constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface. As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion people who want us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत, हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in '91, and he had said
कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नज़रों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house, we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. थैंक यू. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद. आप सभी को मेरी पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के दायरे में से आगे हम सभी एक हैं. हम केवल भारतीय हैं. आप सभी भारत वर्ष का इतिहास जानते हैं. भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ. इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ. स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे. स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं. 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ. तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला. इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ. इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया. आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए. विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है. एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है. मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ. इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दो. आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे. शिक्षा क्षेत्र में आप देखें आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस, यूपीएससी सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है. भारतवर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है. भारत के 8.6% इनका संख्या है. आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है. देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है. सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है. उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है. लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है. शिक्षा क्षेत्र में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है. यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं. यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं. इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है, 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है.
और कृषि क्षेत्र की बात कहूँ तो यहाँ 60% किसान हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमें 2 वक्त के खाने के व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत योजना बनाए हैं। प्रति वर्ष स्वतंत्र बजट किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सभी रोग का इलाज तुरंत हो पा रहा है। गमनागमन, शिल्प, टेक्नोलॉजी, विज्ञान क्षेत्रों में हम बहुत आगे हैं। आज हमारा देश बहुत आगे है। इन नए संसद गृह से भारत वर्ष का नया इतिहास लिखा जाएगा। सबको बधाई देकर मेरा वक्तव्य रखती हूँ। नमस्कार। Dr. Amar Patnaik. Sometimes it is very good to catch someone off guard. Then the productivity and contribution is more genuine and authentic. Okay. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. So it's actually indeed a privilege for me to be present here, speaking about 75 years of Parliament, of the largest and one of the most diverse democracies of the world. It's no mean feat, sir, that parliamentary democracy has flourished in this country because of this Parliament. What is currently happening or is about to happen is that we would be moving in a symbolic fashion from old to the new, from new to the aspirational, and from a democracy which was marked by bills and acts which laid the foundation, or which will be the foundation for several such new bills and acts in the future in the new building. Sir, I would like to speak about a speech which Dr. Ambedkar made in the Law College of University of Delhi way back in 1948. He says, "There could be no doubt that one of the countries which could boast of a great ancient civilization was India. It had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads." It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. It is not that India did not know parliaments or parliamentary procedure. A study of the Vinaya Pitaka and the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments, for the Sanghas were nothing but parliaments, but the Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. So I would concur with what other members were referring to say that democracy did not really originate in Greece, but it originated many years before in this particular land. So if we are talking about parliament, I would like to think that since we knew about the parliamentary functioning for a long time, and since we are talking about the Constituent Assembly gave us the Constitution. But it is the Parliament that helps to make the Constitution a living document by the process of amendments. And that is how each one has enabled and strengthened the other. And these amendments have actually made the Parliament, made the functioning of the Parliament closer to the socio-economic and political reality of each of the times, the entire history of this particular 75 years. So the role of Parliament, in a sense, anywhere in the world, would be fourfold. So one, to make laws, which will be evolving with the times. Second, to pass the budget. Third, to raise national, state, and local issues. And number four, to hold the executive to account by various procedures of question and answer and committees and PSC and COPO and other such matters. Now, if we talk about the first and the foremost duty of Parliament, that is to make laws, I know that the Parliament has made several laws. There are more than 100 amendments which have been passed, but I would like to concentrate on a few. And those are, the first one, on the center-state relations. So the Parliament, right from the time the Constituent Assembly debates have taken place,
has been cognizant of the fact that the states have a very important role to play in this in democracy. In fact, Renuka Ray, she was a member of the Constituent Assembly, while agreeing with Pandit Kunjru, she says it is necessary that the center should be in a position to see that provinces do not fall behind in regard to the minimum standards of development. But agreeing with Pandit Kunjru, it is also not possible for a province to administer its responsibilities in an adequate manner if its financial position is unstable or uncertain. Therefore, the Parliament's job is threefold. One, legislative relations, administrative relations, and financial relations. While on the first two fronts, I think there has not been much divergence except occasional allegations of center legislating on the state list, the problem has been the financial relations, the devolution of funds. And I think this is where our Chief Minister, my leader, Honorable Naveen Patnaik, has always been saying that the cess and surcharge which comes to the central kitty should be made a part of the divisible pool. I think this is what we have to look forward in the next 25 years to be happening, to make the states actually financially independent and financially sustainable to take the entire goal of the nation forward. The second aspect that I would like to talk about is on the issue of women, sir. So on the issue of women, the Parliament has passed several landmark legislations, and many of them have already been spoken about here. One is the Hindu Marriage Act. It removed polygamy, marriage of a maiden and that of a widow, the registration of Hindu marriage, the divorce, the Hindu Succession Act, which is very significant because it gave property rights to women, the Hindu Succession Amendment Act, Child Marriage Act, and several such acts relating to women. But I think it stopped short of one particular last legislation, and that is reservation for women in the parliaments and the assemblies. And that, you know, sir, our leader, Honorable Naveen Patnaik, has been taking it forward for a long period of time, sent emissaries to all political parties. We have spoken here all the time to bring this legislation so that women, the gender parity and the gender equity, the theme reaches its final conclusion by this parliament, whether here or in the new building. And the last point, sir, that I would like to talk about is environmental constitutionalism. Sir, this is the Parliament which has passed most of the environmental laws, starting with Air Pollution Act, Prevention of Air Pollution, Prevention of Water Pollution, Environmental Protection Act. Several such laws have been passed, and that is how the Parliament has responded to the existential crisis that is facing this world at large, which is happening because of climate change. I think the Parliament has responded very well, but there are two gaps which probably could be brought in, and that is how the Parliament of India would have responded to the world, and that is to bring in a legislation to ensure that net zero is reached in a fixed period of time, and incentives are given for proper environmental response. So last point, our Parliament, while we transition from here to that building, would also mark a transition in the way the Parliament of India is responding to technology, sir. So we are moving from a physical, more of a physical parliament to a parliament which is both physical and digital, Sansad, sir. It will be it is not yet hybrid, but that will be the way forward, sir. So I think with this, I would end my speech. Thank you so much for giving me these opportunities. Well, you are very well audited. That's your background. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir. Thank you, Chairman, sir. Oh, here and there. Sir, called as a special session, sir. We are still not aware of the business to be transacted in the remaining 4 days. A shock or surprise may be awaited. We'll have a business advisory committee. Sir? And we'll have a business advisory committee, sir, tomorrow, and you'll be enlightened. As of now, and for tomorrow, you know everything. Okay, sir. Go ahead. As of now, I am telling. So a shock or surprise or nothing is awaiting, and we are also awaiting. Sir, we have completed 75 glorious years of independence and 72 successful years of journey of the Parliament.
Sir, this milestone makes it important to recall the hopes, the ideals we have cherished, we have accomplished in this Parliament, fulfilling those visions of the people who fought for freedom and those who drafted the Constitution. Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to those who laid down their lives for our freedom, the independence which we are enjoying. Starting from Pulitevan, Veerabandya Kattapomman, Marudu Brothers, Velu Nachiyar, Kuyili, and Tilakar, Gokhale, Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, VOC, and unsung heroes and unsung heroines, which is very, very important, sir. Sir, I think this is the right time to tell that. In a freedom struggle in Tamil Nadu, many women participated with involvement. One lady participated with a 1-year child in her hand. And when the police attempted to disperse the crowd, they opened fire. And when the crowd dispersed, she fell in a place. The flag which she was holding was in another place. The child fell in another place. And the bullet that was fired hit the infant and the child died, sir. A child who knows nothing sacrificed his life, and that mother of the child named Kaliammal, she didn't hesitate. She again took the flag and marched. So many unsung heroines or unsung heroes who have to be recollected at this very proud moment. Sir, democracy is a popular sovereignty. The concept of this popular sovereignty is attaining its completion by way of the functioning of the Parliament. Sir, in post the first Indian general election in 1952, the Manchester Guardian commented, "Parliamentary institutions have not had a very good time in Asia. All that is happening in Asia throws a spotlight on the Parliament in Delhi as the one institution of the kind which is working in an exemplary way." So there are two salient features which has brought India to as a focus, as a largest democracy. One is our constitution and another is the Parliament. Sir, Thomas Jefferson, the architect of America, once said that no constitution will survive the test of time more than 20 years. But ours is very vibrant even after 72 years because of the amending provisions. We have changed to time. And ours is not only the longest, and it has been discussed with a very long period of nearly 3 years. Sir, democracy, when it came into existence, some people say Greece, some people say somewhere else, but we are the predecessors, we are the foreigners in everything. For example, in Tamil Nadu, sir, early Chola period, that was in 2nd, 3rd century, some excavations near Chennai, Uttaramerur, brought out the fact that there was a Kudavole system, that is a Yarsan part, in which people will write on the palm leaves their choice of candidate and would deposit in that, and a child would pick up and that person will be the Sarpanch of that area. So this democracy has been in India for more than 2000 years, that too from the southern end, sir. Sir, coming to the Parliament. Sir, sentiments are not attached only to humans, of course to buildings too. I can recollect many things. And even if you move to a rich looking new Parliament, sir, I think you or I, many of us would visit this Parliament and especially the Central Hall. How can we forget that, sir? How many things have happened, which is in history. Sir, the foundation stone for this Parliament was laid in February 1921 by Duke of Connaught. And it was inaugurated by Viceroy Irwin in 1927. 6 years it took place. Sir, we should be very happy to note that the buildings were designed by Sir Herbert Bhaskar along with Edwin Lewin, architects of the new imperial capital. That is not the issue, sir. What I would like to highlight here is the sandstone columns in our Parliament is a state of the art. And it is said that 2,500 stone cutters have been employed to design the
top of the parliament, and almost it took so many years. 2,500 stone cutters and masons were employed to shape the marble there. And the central hall, sir, originally it was designated to be a library. Sir, you know very well everything. And later the Constituent Assembly sat there for 4 years, from 46 to 50. And after that, sir, it's a surprise that Supreme Court had its sittings here in the central hall, till it migrated to 1958 in the present building. And this central hall has witnessed a lot. Sir, I can hear two sounds. In June 1929, they recorded the blast of bomb which was thrown by the revolutionary Bhagat Singh and H.K. Butt to attain freedom. And thereafter in 2001, there was a terrorist attack in the parliament which was to foil our freedom and a challenge to democracy. But this parliament withstood that, sir, thanks to the design and construction of this, as well as the security guards who were very much awake and acted to the situation. Sir, this circular shape of this parliament is a reminiscence of the Rome Colosseum, they say. So, see, I have been here for more than 2 decades, sir. I have been once in Lok Sabha and the 4th term here, sir. No other place in the world I love than this parliament premises. For many reasons. For many reasons. Sir, we have been contributing our service through this parliament. We voice out the people's aspirations. We fulfill their expectations. We redress their grievances by urging the government to understand and act. So this is it. This is the setup of a parliament. We make the government accountable. And this way we have worked a lot and have contributed, and we are setting a trend to the whole world, sir. And this central hall has seen so many. Again, sir, you know very well, it starts from Richard Nixon, then Eisenhower, then Khrushchev. Sir? Many have come. Khrushchev, sir, Margaret Thatcher, Barack Obama, along with our presidents have addressed the joint sessions of parliament after the general election and before the commencement of every year. And people like you, sir, as vice presidents, what all they have done. Sir, all these are reminiscences. So what's your point, sir? Coming, sir, I am pricing about sentiment. This building. We are attaching our sentiment. When we are celebrating 75 years of independence, sir, I have to exalt the building, sir, the parliament. It's not just a building, sir. How many laws? See, in the first 2 terms of this parliament, 1952 and 57, it's only 700 laws have been enacted in this parliament. 700 laws. And moreover, in those first 15 years, till 67, the legacy of the freedom struggle continued by Congress, and as well as opposition parties were there. Who were all there? Communists, the socialists, as well as the culturally conservative Johnson. So you are getting sentimental beyond sentiment. Sir, what exactly are you focusing on? Party? And sir, after the DMK entered into the parliament, the doors were open for the regional parties. In a federal setup, the regional parties should have a very important place, and it cannot be dispensed of, was established only after DMK came here. Our founder leader, Anna, how his voice echoed in this August House, upper house, sir, it is still in the annals of history. Sir, I also visualize who all have been here. Pandit Nehru, Dr. Ambedkar, Lal Bahadur Shastri, Kripalani, Madhu Dandavade, Vajpayee ji, Advani ji, Ramanohar Logia, and our beloved Anna, until Murasali Maran, sir, your colleague when you were in the Ministry of VP Singh, sir. His performance in Doha conference is still a history. Sir, coming to all these points, sir, I think I have some time, sir. No, sir. No, what I am doing is that the main opposition party, their entire time had been taken by the Honorable LOP. But I would still accommodate some of them, given their huge experience. That being the situation, I am rationally, uniformly curtailing time, more of the ruling party, but of others also. So please cooperate with me. Sir, I could hear, though I was not there,
the Tryst with Destiny speech of Pandit Nehru. The Tryst with Destiny, the speech delivered by Pandit Nehru at the stroke of the midnight hour, sir. No, what I said was that we had a tryst with destiny. Sir? We had tryst with destiny in Yeah. 15th August to 1947. Yes, sir. Long years Again, the ago, we had a Parliament met tryst here with the destiny. at midnight, rolling out a GST regime. So When I the was whole saying, world sleeps, India after a gap of 70 will years. awake to life and freedom, sir. He started his speech. Sir, I had the privilege of being here during the Golden Jubilee of the independence, sir. And in the Central Hall, we heard the speeches of Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. And that's a very green memory. So also these speeches, sir. And after the speech of Pandit Nehru, very important here is we have to recollect this mentioning of Dr. Ambedkar, the architect of our constitution, because this is the right time when we are speaking about constitution, we have to preserve also. So I have to quote only two things, one of Ambedkar's and another of Anna. However, a constitution may be, quote Dr. Ambedkar, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. Okay, sir. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. If those who are called to work it happen to be a good lot. The Constitution can provide only the organs of state such as legislature, executive and judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. That is the Climax is, sir, if I find the Constitution misused, I shall be the first to burn it. I'll be the first to burn it. Sir, it was said by none other than Dr. Ambedkar, sir. So also, during his last speech in the Constituent Assembly, he congratulated everyone, those who supported and those who dissented. The proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline in all its rigidity would have converted this assembly into a gathering of yes men. So he says that, he goes on to thank all those who dissented also. It has a relevance, sir. Huh? It has a relevance. All I can say, everything has a one relevance, second. sir. All I can say, Dr. Ambedkar had been very prophetic. Very? Very Yes, sir. prophetic. Yes, sir. Yes. I wish That's why the I quote, people sir. sitting in this house would be in a position to take a call while being here. That's something which has eluded us. Two things I quoted very much, sir, here. However, a constitution may be good, if those who are implementing it are not good, it won't prove to be bad, number one. And second, he has said if it is misused, he will be number one to blame. Thank you. Sir, and our late leader, Anna, very important, sir, he entered into this parliament and said, I am from the Dravidian stock. I have something distinct and different to offer to the nation at large. He started, and very important, he spoke during the Official Languages Amendment Act, sir. Sorry. Please conclude. Sir. Yeah. If it is uniformity, quote, Anna spoke, if it is uniformity that you are going to aim at, you are not going to achieve it, come what may. This country consists of different ethnic elements, different cultural elements, and different linguistics groups. It is only unity within this diversity that we should arrive at, and not by destroying the fine niceties of this diversity, mistaking uniformity for unity. May I ask members of this House and the Prime Minister whether language alone is the cementing force needed for the unity of this country. There are regional imbalances, there are regional leanings, there are linguistic leanings. All these things have got to be bridged if you want to have a sort of unity without uniformity for this country. Unquote. Thank you. Unquote, sir. Sir, this Parliament has experienced very well. It has flourished all the diversities, sir. Our social, regional, linguistic, ethnic, religion, everything. But that has to be maintained.
That is our foremost wish, sir. Sir, many things have to be observed. I don't know, sir, why you are hurrying up when you have been liberal with everyone, sir. Sir, even your time is over. Yeah, sir. Sir. Yes. Give me 2 more minutes. Let me conclude, sir. Let me conclude, sir. Sir, everyone is optimistic that when we move to the new parliament, it's a new building, but our convention will be the same. Our functioning will be the same. We will be upholding democracy as the constitution, which is our guiding light and guardian. And it is the responsibility and duty of everyone. Sir, the parliament understands and establishes whoever is in the opposition will be the ruling party next time. So this is, of course, democracy. The parliament understands, it has been repeated. Sir, I would like to say only one thing, sir. In the recent days, the space for the opposition is shrinking. There has been a decline in the ability of the parliament to hold the government accountable with fewer days of working. Scrutiny of legislative proposals is weakening. Expansive executive control over the legislative process persists. Frequently, government resorts to ordinances than legislation. Sir, this is only our concern, sir. At least we have to be free. Because, sir, you know very well. You are right. Yes, sir. But when I look within, yes, sir, I find lost opportunities. Enough opportunity was available. Why that was not availed? We have to be very rational, committed. It is good to speak these things. Yes, sir. Good to talk of sublimity. But I keep a diary. And mind you, I am in pain. Sir, I did everything in spite of perception, whatever be around, sir, to make available platform to have people out there. Let us hope, pray, and wish that we will avail every opportunity to make a contribution in this great theatre. Sir, we repose our confidence without disturbance, without disruption. Shri S. Niranjan Reddy. Sir, one last sentence. Sir, the ideals of Anna, the Dravidian policy, and sir, we are second to none in upholding the sovereignty of this country, sir. When Chinese aggression came, we gave up our policy, the individual Dravida Nadu. And when the Bangladesh war came, our then Chief Minister, Dr. Kalingar, gave 6 crore rupees, the first ever in the state. Shri S. Niranjan Reddy, 5 minutes. Go ahead. And we will Thank you. Thank you, Chairperson. Sir, I think it is my fortune that I finally got to address the House with you being in the chair, maybe on the last day of the House being in session. In this House. Sir, parliamentary journey of 75 years is quite a historic occasion for someone like me to have an opportunity to speak. Sir, I regard myself as someone who is relatively inexperienced and young parliamentarian because I have only completed 1 year. Maybe I bring the advantage of fresh eyes to see the ongoings of the parliament, to maybe give some inputs of mine, sir. And sir, but I have been old student of the Constitution. I was going to actually speak little more about it, sir, until I realized you have much more experience than me about understanding the Constitution. Sir, I think the single biggest achievement of our Constitution has been that it has managed to survive. It has managed to survive, sir, despite some challenges it faced during some emergencies. It has managed to survive despite it being tested during a long coalition period when the country came out democratically rich. Sir, it has continued to serve the country most positively. Sir, while we speak of the new Parliament House and where the functioning may shift, sir, I remind myself that we belong to the Rajya Sabha, which is a continuous house, and we are serving under a constitution which is a continuous document. So both of these are going to be permanent features, sir, that would possibly guide the functioning of our house even in the new parliament. Sir, my passion with this constitution subject
started with my reading of the Constituent Assembly debates. Today's topic is Samvidhan Sabha and the Constitution working for 75 years. Sir, every time I read the Constituent Assembly debates, they are an education in itself because the quality of debates, the kind of divergent views that were expressed in a very productive manner and the symbiotic manner in which the Constitution came to be forged, sir, resulted in the most prolix Constitution and the most living and breathing Constitution, sir. So in my view, when someone says that the Indian Constitution is possibly one of the most amended Constitution with more than 100 amendments, it is a salute to the Constitution that the Constitution permits such changes to be made having regard to the diversity and the advances of the society. Sir, we have remained up to date with our Constitution. It is possibly the most brilliant legal document that the world has seen, sir. Sir, in terms of the learnings and challenges, sir, I think we have completed 72 years of being a republic. We have completed more than 75 years from the time the Constituent Assembly originally sat to prepare the Constitution document. Sir, I think when we now move into the new house with possibly new infrastructure and digital infrastructure, so we may have to be mindful of a few challenges we may have having regard to the learnings of the past. Sir, one of the challenges that I would be looking at, and I'm quite sure, sir, the government would steer us through these challenges, would be the role of states. Sir, I would like to just maybe, sir, my inexperience and my green eyes, it allows me to see something where I find that Rajya Sabha increasingly is becoming like an echo chamber of the Lok Sabha where we debate the same issues on the same footings and on the same concerns. Sir, we are a council of states. We represent the states. So I would, sir, prefer and I would suggest, but subject to correction by all the seniors here who are much more experienced than me, that when we possibly move into the new house, we look at our role as a council of states more seriously. We may have to look at representing the interests of states. So when I speak of representing the interests of states, I do not speak in terms of a divisive central versus state sphere, sir, because I also understand that the same party which is ruling the central government is in power in majority of the states. So when we speak of state subjects, state interests being protected, it is not a divisive debate that I am trying to provoke, sir, but I am trying to say that it can be done in a constructive manner. So one other challenge that may be facing us, yes, sir, I am taking only one more minute, sir. One other challenge that we may have to encounter, sir, with the enlarged space in the new Lok Sabha, there are a few concerns about the South Indian states and the more developed states feeling that will they be in that sense outnumbered because Article 82 gives a protection up till 2026. Would that be balanced in some manner? Sir, I'm sure we'll have an opportunity to debate it, but I think it's a matter of concern which I just wanted to place for the House to consider in due course. Sir, then the last point I want to make, sir, is we are now moving towards a developed nation, sir. We have that 25-year goal. We would want to commend the government and support it fully. As Indians, everyone wants India to be a developed country. But development, sir, in many respects, apart from the material development that we are gaining, sir, I would think that the very fact that we are preserving the constitutional ethos in its fullest form is possibly the greatest tribute to India as a democracy. And sir, the most satisfying thing for me about G20 was India calling itself as a mother of democracy, because that clearly shows the path India wants to take going forward as a democratic country. Sir, I thank you for granting me an opportunity for speaking on such an important occasion. Shri Rajiv Shukla. Very brief. सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण किए हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो,
कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और ये लोगों को जोड़ता है, ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधु लिमय जी नए MP होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया और उन्होंने सुना। और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला कि कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा जी वो साउथ मेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुँच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। तो मधु लिमय जी नए MP आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुँच कर उनके कहने चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी, उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो, चाय और तुमने चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन एक चीज़ मैं सलाह दूंगा एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ, तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो मधु लिमय जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूँगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूँगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमय जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते थे, उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज़ से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें संसद को उसमें देखने को सीखने को मिलती हैं। ये स्थान सर सेंट्रल हॉल जैसी चीज़ का प्रतीक है। कितनी भी शत्रुता हो, आमने सामने पड़ जाते हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, वहाँ से बात खुल जाती है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो ये संविधान भी जो यहाँ पे बना, वो हर प्रधानमंत्री का योगदान है, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे जो है इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी का हो, गुजराल साहब का हो, अटल जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो और अब मोदी जी का, सब जो यहाँ आते हैं सब काम करते हैं। तो ये सब जो है हमें आपस के यही संकल्प लेना चाहिए। आज के नए भवन में जा रहे हैं तो हम ये मन बदलें, दिल बदलें। जैसे अटल जी ने कहा था कि जो है ये ऐसी सत्ता आती हो जाती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो है मन मुटाव नहीं होता। दिल जो है हम लोगों के उसी तरह रहने चाहिए, आपस में मेलजोल करके। और विपक्ष के पास है क्या सर, डिप्टी चेयरमैन सर, विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ संसद में बोलने के लिए। उसके पास ना ऑफिस है, ना दफ्तर है, ना ऑर्डर करने के लिए फाइल है, कुछ तो नहीं है, सिर्फ अपनी बात कह सकता। अगर वो बात कहने का भी अवसर विपक्ष को ना मिले तो फिर विपक्ष के पास रह क्या गया? तो ये जो है संसद में ही होना चाहिए कि नई बिल्डिंग में नए बड़े दिल के साथ जाएं, कटुता छोड़ें, शत्रुता छोड़ें, हैं, मिलजुल के और काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक मिनट सिर्फ लास्ट मेरा है। और परिवार की तरह रहें, क्योंकि दुश्मनी एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, उससे क्या फायदा है? राजनीति में दुश्मनी की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। और लोग तो लगे रहते हैं चारों तरफ लकड़ा रहे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हरे हैं। तो यहाँ लोग जुटे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ वो ये करके। और जो भी आता है, चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें, सबको एहसास होना चाहिए कि जो है ना कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। ये सब एहसास हमें रहने चाहिए। तो बस जो संकल्प है नई संसद में जब हम जा रहे हैं तो इसका ही होना चाहिए। मैं उसको स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि वहाँ जाके हम अपने मन बदलें, दिल बदल के बैठें। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आके हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, महंगाई पर काबू करें, युवाओं को रोजगार दें, सबको न्याय दें। एक और बात कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, वो काम नई संसद होना चाहिए। राजीव जी, अनेक और वक्ता हैं, प्लीज। और आपके माध्यम से इस बिल्डिंग का उपयोग क्या हो? ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, यहाँ सब कुछ हुआ, सबने बताया, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा? इसके उपयोग पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट बन के ना रह जाए। धन्यवाद। संसदीय कार्य के लिए किसी न किसी कार्य, धन्यवाद माननीय राजीव जी, धन्यवाद। माननीय फौजिया खान जी, माननीय फौजिया खान।
सर ये लोग नहीं हैं। जिस इमारत में हम आज जिसको अलविदा करने जा रहे हैं सर, ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है सर। ये हमारे संसदीय परंपराओं का खजाना है, ये हमारे प्यारे भारत के सपनों का गुलिस्तान है सर, जिस इमारत को आज हम अलविदा कह रहे हैं। Sir, the soul of parliamentary democracy dwells here. It is through this parliament that India has lived by our constitution. Sir, Constituent Assembly में 15 महिला सदस्य थे, उनमें से एक महिला सदस्य दक्षिणयानी वेलियंदन, इन्होंने कहा था, a Constituent Assembly not only frames a constitution but also gives the people a new framework of life. Sir, it is by this framework of life that we are living in this parliament. This is certainly, sir, not like an old faded garment which we discard and it is replaced by a glittering attire. This institution has a history. It has sanctity. The soul of democracy, sir, is important. डर ये है कि कहीं सर जब हम अपने इमारत का शरीर बदलने जा रहे हैं तो कहीं लोकतंत्र की आत्मा यही न रह जाए सर, ये डर है। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The first general elections under the new constitution were held during the year 1951 and 52, and the first elected parliament came into existence in April 1952, sir. Since then, this parliament has been the custodian of democracy. Sir, this has been the custodian of the dreams and aspirations of the people of India. This has been the custodian of the rights of men and women and children, sir. This has been the custodian of equality and justice. Several prime ministers have led this country. Several prime ministers have led this glorious nation, sir. Their vision, their contribution has made India grow like a 75-floor skyscraper. We are a skyscraper now. But that foundation, sir, is very, very important. And this foundation was laid by Shri Jawaharlal Nehru, who was 16 years Prime Minister of India, who has been called the father of modern India, sir, who carried forward the noble ideals of Mahatma Gandhi and laid the foundation of socialist, secular values and communal harmony. Sir, we cannot forget, sir, that it was his vision of modern India and his decisions of starting IITs, IIMs. Madam, please conclude, madam. Sir, it's over. Yes, 3 to 4 minutes. Jo others mein 3 to 4 minutes, please. All right, sir. Sir, I will say that, coming back to the context of the present times, I will say many prime ministers have led this country. Rajiv Gandhi ji has brought about the IT revolution, sir. He has brought reservation for women in the local self-government. There are so many decisions taken. Indira Gandhi was a prime minister who broke Pakistan into two. वो Iron Lady जिसकी वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं, सर. ऐसे, sir, please give me a minute at least. Please. It's already 4 minutes, madam. Please give me a minute, sir. This has been the time which has been allocated here. 3 to 4 minutes, please. Please cooperate. Please. Should I conclude or should I stop? Please conclude. Please conclude. Okay, sir. Last में इतना ही कहूँगी कि आज हम मन की बात कर रहे हैं. आज सरकार मन की बात करती है, लोग सरकार के मन की बात करते हैं. सर, लेकिन हमारे जो तिरंगे के रंग है, आज वो सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं सर. जो 3 रंग है वो नहीं दिख रहे हैं. शायद कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है. क्योंकि सर
ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आज जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जो सीबीआई है, ईडी है, हमारे जो अलग अलग ऑटोनमस एजेंसीज है, आज उनको एक ही रंग नजर आ रहा है। सर, मैडम, इट्स ऑलरेडी 5 मिनट्स, 3 मिनट के बजाय 5 मिनट आप बोली। थैंक यू। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, प्लीज। हिट करने को लगे तो श्रीमान, समय तो है नहीं, टॉपिक ऐसा है जिस पे पूरे दिन बोला जा सकता है, लेकिन बहुत जो लिमिटेड टाइम होगा 2-3 मिनट का, मैं उसमें ही अपनी बात खत्म करूँगा। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यात्रा यही है। यात्रा की बिगिनिंग होती है, यहाँ से शुरू की थी, कहाँ पहुँचे, अभी ख़त्म नहीं हुई है। नेहरू जी से चले, मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है। मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा, ये ज्ञान में देने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए। समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखाए। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे। लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ, बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी, कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो। एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे। पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, और दाखिला किया। फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। मैं कहना ये चाहता हूं कि उस अब 300 दिन से ज़्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज़्यादा हो गए, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसमें नहीं करने जा रहे। और 2 उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना। पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए, हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। तो स्वागत गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला, तो कब तक चलता रहा। कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी हो। तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था। सारे देश ने देखा कि नहीं आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए, तो एसपीजी ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहाँ। इसलिए आप विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नई सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोट की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं। इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था। क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके? सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है। कानून बनता है कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। कानून सारे देश की जनता को आतंकित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बने, अपराधियों पर लगना चाहिए, आर्थिक अपराधियों पर लगना चाहिए, लेकिन कहीं व्याख्या नहीं है जिस पे चाहें, जिसको चाहें उस पर
पुलिस जाके पकड़ लेगी, ईडी पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। क्या ये संविधान की मंशा संविधान निर्माताओं की इस तरह के कानून बनाने की रही थी? कभी नहीं रही होगी। बहुत डेमोक्रेट थे और सारे लोग थे, और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानून नहीं बने। कोटा बना, टाडा बना, सब बने, लेकिन वापस हुए कि नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े आदमी थे, अडवाणी जी थे, यहाँ उस सदन में इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में, डॉक्टर लोहिया रहे और पहले रहे। संविधान सभा में तो थे ही सारी इंटेलेक्चुअल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने। कल यहाँ से आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हिरेन मुखर्जी, यहाँ भूपेश गुप्ता, तो जाने कौन कौन रहे, हर क्षेत्र के लोग रहे, बहुत बड़े लोग रहे। कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए कि हम जिन कानूनों से आम लोग डरने लगे। आम लोग जब कानून से डरने लगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। इस सदन में, इस संसद में मैं 30 साल से ज्यादा रहा, लगाव तो है ही। अब कल दूसरे में चले जाएंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि नए संसद भवन में जो भी आगे चल के नए लोग आए, उनमें से कुछ बड़े लोग पैदा हों और देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को ठीक रास्ते पर ले चलें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका वही लगाव वहां भी रहेगा, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष दिन है, और वो दिन जब ये सदन आखिरी बार बैठ रहा है इस बिल्डिंग में, और 24 घंटे बाद इस बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाएंगी, और 75 साल का जो काम हुआ है वो आगे चलता रहेगा नए बिल्डिंग में। मैं अपना वक्तव्य, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 मिनट है, अपना वक्तव्य जो है हमारे देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, संविधान सभा के सारे मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया, उन सबको मैं नमन करते हुए अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। मान्यवर, 75 साल और 3 मिनट वो करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे सामने मेरे 2 वक्ता ऑलरेडी मेरी पार्टी के बोल चुके हैं। 75 साल में बहुत कुछ हुआ है, और बोलना शुरू किया जाए तो खत्म होने का नाम न लेगा। मगर 75 साल में जो चीज कर सके थे, एक चीज छूट गया मान्यवर। इस सदन में एक वो चीज छूट गई है जो अगर शायद हम कर जाते तो शायद पूरा लगता कि आज हम कुछ पूरा करके वापस जा रहे हैं नए सदन में, ये एहसास होता। वो क्या छूट गया मान्यवर? क्या रह गया? 1996 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब आया था, उसको पारित नहीं हो पाया। 1996 में आया, 1998 में आया, 1999 में आया, 3 बार इसी पार्लियामेंट में, बट पारित नहीं हो पाया। फिर मान्यवर, ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो मैं लेके आया हूं आपके पास, जो कि 9 मार्च 2010 को इस सदन ने पारित किया और लोकसभा में भेजा कि हमारी महिलाओं को इस देश के 33% संरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं में। अगर ये उस दिन पारित हो जाता तो शायद 75 साल में जितना काम किया है, उन 75 सालों